So, dear students, I'm going to start first chapter, that is food and its sources. Okay, आपका जो 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें से फर्स्ट चैप्टर है that is food and its sources. So, food is necessary for all living organism. Okay, हम सब फूड खाते हैं. Yes. Okay, so most of us eat the food at least 3 times in a day: breakfast, lunch, dinner. Yes, at least. Okay, 3 times we are taking the food. So this food, why we are taking the food, function of food. So first function of the food, that is food gives us the energy. Okay, function of food, why we are eating the food, तो हम food खाते हैं. So first function, that is food gives us the energy. food हमें क्या देता है, that is energy देता है. Did you understand the first function? Just like कार है, ओके, बाइक है, उसमें हम पेट्रोल एंड डीजल यूज करते हैं. सो पेट्रोल एंड डीजल आर द फ्यूल. ओके, एंड फ्यूल फिलअप करने के बाद कार देन टू व्हीलर चलती है. यस ना, उसमें पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो आपकी कार चलेगी? नो. आपकी बाइक चलेगी? नो. सो लाइक दिस, ओके, लाइक दिस human body need the food as a fuel. Okay, हमें भी फूड लगता है as a fuel. So food gives us the energy. Then next one, food is important for the growth of the body. Okay, why we are taking the food? Food gives us the energy for different activity which are takes place in our body. ओके, हमारे बॉडी में जो भी डिफरेंट एक्टिविटी चलती है उसके लिए हमें फूड इम्पोर्टेंट है. देन फूड हेल्प इन द ग्रोथ. देन नेक्स्ट वर्ड, फूड इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बॉडी वार्म. व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट? कीप आवर बॉडी वार्म. ओके, हमारी जो बॉडी है उसको वार्म रखने के लिए भी फूड इम्पोर्टेंट है. Then again, why food is important? Food is important because it protect our body. Okay, it protect our body from the different type of diseases, or it help in healing the wound. Okay, it help to heal the wound. Okay, it help to heal the wound. For that also food is very important. So first function, that is food gives us the energy. Food is very important for the growth. Food is important to keep our body warm, and it help to maintain the good health. Okay, so it help to maintain our good health. Okay, to maintain our good health. For that, food is very important. Okay, so these are the function of the food. Gives us the energy for the growth of the body, to keep our body warm, help to heal the wound, and to maintain the good health. Okay, so for this we are eating the food at least three times in a day. We are taking the food. हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड about the function of food. Now the food atom which we eat, in that food atom the nutrients are present. जो फूड आइटम हम खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंस होते हैं? दैट इज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो what do we mean by nutrients? The chemical substance which are present in the food and it is required for the body activities, and that chemical substance is called nutrients. The chemical substance which are present in the food
and it is required for the body for different activities, and that chemical substance are called nutrient. There are five major nutrients which are present in our food, that is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, along with these water and roughage. It is also present in our food. So understand about the nutrients. Yes, along with this water and roughage also. Understand about the nutrients. Okay. Now next one, in our diet, some food atom which we eat on a large proportion. So the food atom that we eat in a large proportion on daily basis, and that food atom is called staple food. Okay, the food atom which we eat on large proportion. The food atom which we eat on a large proportion. Food atom that we eat in large proportion on a daily basis, they are called staple food. For example, wheat is staple food. ओके, देखो हमारा जो फूड होता है उसमें चपाती होती है. यस, सो व्हीट इज ऑल्सो स्टेपल फूड. साउथ में गए आप, यस, साउथ में आप यदि जाते हो तो उनके फूड आइटम में दाल नहीं आती बेटा, स्टेपल फूड में दाल नहीं आती है. ओके, व्हीट इज स्टेपल फूड. हम साउथ में गए तो राइस, राइस इज स्टेपल फूड. ओके, कोस्टल एरिया में गए तो उनके उसमें यस. ओके, सो the food atom that we eat in a large proportion on daily basis, and that food atom are called staple food. Is it okay up to this? Okay, so ह्यूमन बींग ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. ओके, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं एज पर देयर टेस्ट, लाइफस्टाइल, हैबिटेट, नीड, अवेलेबिलिटी. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम वी आर ईटिंग. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ईट द फूड आइटम मेड फ्रॉम द राइस सच एज इडली, डोसा, स्टीम राइस. ओके, जो साउथ के पीपल से, ओके, उनके फूड में इडली, राइस, डोसा, स्टीम राइस मोर होता है. वाइल जो पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके फूड आइटम में व्हीट बेस, ओके, व्हीट से बना हुआ, दैट इज चपाती, ब्रेड, नूडल्स, उनके फूड आइटम में मोर होते हैं. मेनी पीपल ईट द फूड आइटम that are made from the chicken, egg, meat, fish. So different region people eat the different type of staple food. So to make the food, we need the ingredient. Okay, to make the food, we need the ingredient. सपोज आई हैव टू मेक द राइस. मुझे राइस बनाना है. ओके, कर्ड राइस बनाना है. तो मुझे क्या लगने वाला है? राइस लगने वाला है, वाटर लगने वाला है, साल्ट लगने वाला है, ऑयल लगने वाला है. सो दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो दिस इंग्रेडिएंट मेक द पर्टिकुलर डिश. मुझे पुलाव बनाना है, मुझे राइस लगने वाला है, वाटर लगने वाला है, वेजिटेबल्स लगने वाले हैं, स्पाइसेस लगने वाला है, ऑयल लगने वाला है. सो ऑल दोज आर कॉल्ड ingredient, and by using this ingredient मैं डिश बनाने वाली हूँ. कौन सी डिश? फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल पुलावा, वेजिटेबल बिरयानी, पुलावा बनाने वाली हूँ, बिरयानी बनाने वाली हूँ. सो यस, कौन सा भी लो. ओके, सो दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट. सो ये जो इंग्रेडिएंट है, बाय यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट आई मेक द डिश, and there are different type of dishes your mother is also making for you. आपकी मम्मी भी आपके लिए बनाती होंगी. So a particular variety or the preparation of food serve as a part of the main meal is called the dish. Okay, a particular variety or the preparation of food serve as a part of main meal is called the dish. So to make the dish, we need the ingredient. ओके, हमें कौन सी भी डिश बनानी है तो उसके लिए हमें क्या लगने वाले हैं?
Ingredients. So ingredients are the substance which make the different dish. Ingredients से क्या बनती है? Different dish बनती है. For example, steam rice. I need the two ingredient water and raw rice. Vegetable pulava, I need the rice, water, vegetables, oil, spices, salt. Okay, so those are called ingredients. Is it okay up to this, my dear students? Okay. Now, our chapter heading is food and its sources. So हम जो food खाते हैं हमें कौन से two sources से मिलता है? So we obtain the food from the two main sources. First source, that is the plant source. We obtain the food from the plants, and next one we obtain the food from the animals. Okay, हमें फूड कौन से टू मेन सोर्सेस से मिलता है? We obtain the food from the two main sources, that is the plant source and next one, that is animal source. So firstly we study about the plant source. Okay, सबसे पहले हम कौन से source डिस्कस करने वाले हैं? Plant sources, and after that animal sources. So green plants. Okay, so plant sources. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. Okay, green plants खुद का food बनाते हैं by the process of photosynthesis. Okay, green plants make their own food by the process of photosynthesis. So how green plants make their own food? Green plants take carbon dioxide from the air. It takes water from the soil with the help of roots. They, in the presence of sunlight, okay, in the presence of sunlight, and there is a green color pigment that is called chlorophyll, which is present in the leaf, and by using this, green plant make their food, and in this process plant gives oxygen to the atmosphere. ये प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देते हैं. So green plants कौन सा फूड बनाते हैं? Glucose, and extra glucose is converted into starch. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन किसमें होता है? स्टार्च. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस. Understand the definition of photosynthesis. May I repeat again? Green plants make their own food by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight, and leaf on tree, because in the leaf there is a green color pigment is present, that is called chlorophyll. So by using carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, green plant make their own food, and in this process they are giving oxygen to the atmosphere, and that food is glucose, and extra glucose is converted into starch. ओके, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन किसमें होता है? स्टार्च में होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, and green plants are also called producers. Okay, what is the meaning of producer? Those who produce. जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. Okay, so green plants are called producers. So plant produce more food than they require. So extra food is stored in the root, stem, leaves, flower, fruit, and seeds. Okay, so green plants are called producer. Why green plants are called producer? Because they make their own food. Okay, they make their own food. They make
their own food. So green plants are called producer, and green plants are also called autocropper. ग्रीन प्लांट्स को और दूसरा नेम क्या है? ऑटोट्रॉप. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट. ओके, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. सो ग्रीन प्लांट्स का पहला नेम क्या है? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. ग्रीन प्लांट make their own food by using carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. They make the food, that is food is glucose. Extra glucose is converted into starch, and in this process green plant use oxygen to the atmosphere, and this process of food making, yes beta, very good, this process of food making is called photosynthesis. ओके, ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ प्लांट्स ने फूड तो बना लिया. ओके, यस, ऑटोट्रॉप. प्लांट्स ने फूड तो बना लिया, बट प्लांट ने इतना बनाया एंड प्लांट को इतना ही लगने वाला है. सो व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा फूड? प्लांट ने इतना फूड बनाया, प्लांट को इतना ही लगने वाला है. सो दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड. ये स्टोर्ड होता है, रूट में स्टोर्ड होता है, देन नेक्स्ट वन स्टेम में होता है, फ्लावर में होता है, लीव्स में होता है, फ्रूट्स में होता है. So this extra food is stored in the different part of the plants. Okay, this extra food is stored into the various part of the plant. Is it okay, dear students? Okay, now plant having the different body parts, and this extra food is stored in the different part of the plants. Okay, so plants के कौन कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है? So first one, we obtain the food from the roots. Okay, plants के कौन सा पार्ट? रूट से हमें फूड मिलता है. So plants के पार्ट सबको पता है, root, stem, leaves, flower, fruit. Those are the parts of the plant. Okay, ये क्या हो गए? प्लांट के पार्ट्स हो गए. So first one, that is a root. Okay, root है, but वो food stored करते हैं. So some plants such as carrot, radish, turnip, beetroot. Okay, ये क्या है? Actually root है. Sweet potato root है, and they stored the food. So those root which are rich in the starch. ये जो root है, इसमें क्या ज्यादा रहता है? Starch. And that's why they are called modified root. Okay, उसको कौन सा root बोलते हैं? That is modified root. So okay, मैं repeat again. Some plants such as carrot, radish, turnip, beetroot, sweet potato, those are the roots. Actually ये जो हम खाते हैं, ये क्या है? Roots है, and those roots are rich in starch, and that's why they are called modified roots. And those roots are eaten as a raw or cooked. हम उसको रॉ भी खाते हैं एंड कुक करके भी खाते हैं. ओके, सो यस, दे आर कॉल्ड, मैंने लिखा है, दे आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. सो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल कंपल्सरी लर्न करना है. ओके, कैरोट, रेडिश, टर्निप, beetroot, sweet potato are the example of modified root. Okay, or food from the roots. Next one, we obtain the food from the stem. Okay, we obtain the food from stem. Okay, हमें stem से भी food मिलता है क्या? Yes, we obtain the food from the stem. Okay, actually part का plant का कौन सा part है? Stem. Okay, stem है, and we eat as a food. So stem of the many plant are eaten as the food. Example are potato, onion, turmeric, ginger, garlic,
then cloacacia. Okay, those are the stem. Okay, the stem are found below the soil. Stem है but कहाँ पे present रहते हैं? Below the soil, and those stem are called underground stem. Okay, they are called underground stem. The stems are present below the soil. Stem है कहाँ पे present है? Below the soil, and they are called underground stem. Okay, and underground stem are the modification of the stem. Okay, so which are the example of underground stem? Potato है, onion है, turmeric, then ginger, garlic are the modified stem. ये क्या है? modified stem है. Okay, और underground stem है. Okay, yes, 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 कोलोसिया भी आता है. Yes, potato, onion, ginger. Okay, garlic. May I repeat again? Potato, onion, turmeric, ginger, garlic, then colocasia. Those are the underground stem, or we obtain the food from the stem. Actually stem है but उससे हमें food मिलता है. Okay, now next one, that is food from the flower. Okay, next we obtain the food from the flower. Okay, plant का कौन सा पार्ट है? फ्लावर है, एंड फ्लावर से हमें फूड मिलता है. हम वो फ्लावर खाते हैं एज अ फूड. ओके, फ्लावर है बट हम उसको खाते हैं एज अ फूड. डोंट यूज द व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. ओके, डोंट यूज द व्हाइट बोर्ड, डोंट डिस्टर्ब मी. So, flower of the plants such as cauliflower, broccoli, banana, pumpkin, okay, they are also eaten as the food. Actually, plant का कौन सा part है? Flower है. Okay, but we are eat as a food. May I repeat again? Cauliflower, broccoli, banana, pumpkin. Okay, so those are the flowers. Okay, and we eat this flower. Even ड्रमस्टिक के फ्लावर की भी कोई कोई लोग वेजिटेबल बनाते हैं. ओके, ड्रमस्टिक के फ्लावर, ड्रम, ओके, ड्रमस्टिक के फ्लावर की भी वेजिटेबल्स बनाते हैं. ओके, सो फूड फ्रॉम द फ्लावर. फ्लावर से हमें फूड मिलता है. यस, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, banana, pumpkin. Then next one, that is food from the leaves. Next one, that is food from leaves. Plants का कौन सा पार्ट है? Leaves है. Okay, and उससे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है. Okay, प्लांट का कौन सा पार्ट है? Leaves है, and we are eating as a food item. So, for example, cabbage, then lettuce, then spinach, then mustard, then fenugreek, then next one mint, पुदीना बोलते हैं, then coriander for the flavoring and decoration, that is for the garnishing. Okay, to prepare the chutney we are using the mint, pudina, and then coriander. Mint is the herb. Mint किसमें आता है? herb में आता है, and has the many medicinal properties. Okay, so those are the leaves. Okay, plants का कौन सा part है? Leaves, and we eat as a food. Okay, leaves है. Even कोई कोई लोग रेडिश के लीव्स की भी वेजिटेबल बनाते हैं. ओके, रेडिश के जो म्हणून तुम्ही आंसर दिलं. ओके, रेडिश के जो लीव्स होते हैं उसकी भी वेजिटेबल्स बनाते हैं. सो इज इट ओके? First part, we obtain the food from the root. We obtain the food from the stem.
We obtain the food from the flower. We obtain the food from the leaves. Now we obtain the food from the fruit. Okay, we obtain the food from fruits. Okay, fruit से भी हमें food मिलता है. Okay, food from the fruits. Okay, fruit से भी हमें फूड मिलता है. सो मेनी प्लांट सच एज गवा, एप्पल, मैंगो स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. ओके, एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड होता है प्लांट्स का. कौन से पार्ट में होता है? फ्रूट्स. सम वेजिटेबल सच एज टोमेटो, ब्रिंजल, pumpkin, they are actually fruits. ओके, वी आर ईटिंग एज अ वेजिटेबल बट एक्चुअली वो क्या है? फ्रूट है. टोमेटो, ब्रिंजल, पंपकिन, लेडी फिंगर, गार्ड्स, चिली. ओके, ये सब एक्चुअली क्या है? फ्रूट्स है एंड वी आर ईटिंग एज अ वेजिटेबल. सो एक्स्ट्रा फूड किसमें स्टोर्ड होता है? दैट इज द फ्रूट्स. ओके, सो फ्रूट्स के भी टाइप है. फ्लफी फ्रूट्स जो कि सॉफ्ट है, स्वीट इन टेस्ट. फॉर एग्जांपल पपाया, एप्पल, बनाना, गवा, मैंगो. देन ड्राई फ्रूट्स, dates, raisin, then apricot, then almond, cashew. Those are the dry fruits. And some fruits as a vegetable: brinjal, tomato, pumpkin, bean, ladyfinger, snake gourd, chili. Okay, those are the vegetables. Yes, dry fruits में आते हैं. Okay, those are the vegetables. Okay, so we obtain the food from the fruits. Okay, so हमें फ्रूट से भी फूड मिलता है. Then next one, we obtain the food from seed. प्लांट का कौन सा पार्ट है? सीड पार्ट है. एंड वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द सीड. सीड से हमें फूड मिलता है. सो सम ऑफ द प्लांट store the food in their seed. Okay, plant make the food. Plant make the more food and actually it need the less food. So extra food is stored in the root, in the stem, in the leaf, in the flower, in the fruit and in the seed also. So extra food. Okay, some plants stored the food in the form of their seeds and some of those seeds are eaten as a staple food. So ये जो seeds है, seeds are again classified as cereal है, pulses है, then oil seed है. Okay, seed जो है, seed में भी type है, that is cereal, pulses, oil seed, even that is spices है, beverages में आते हैं. So wheat, maize, rice. Okay, those are oats. Those are the cereals. ये क्या है? Cereals. Seed such as black gram, red lentil, pigeon pea, kidney bean, pea, red lentil. Okay, those are the pulses. And next one, oil seed. We obtain the oil from the mustard, groundnut, then coconut, then sesame, then sunflower, then soya beans. So those are also seed. So seed में सबसे पहले क्या होते हैं? That is cereals. Okay, seed में सबसे पहले क्या होते हैं? That is cereals. Then seed में next one, that is pulses. Then seed में next one, that is oil seed. Then next one, that is beverages. Okay, for example कॉफी का सीड होता है. ओके, टी के लीव्स होते हैं, कॉफी का सीड होता है. सो सीड में नेम्स आते हैं, दैट इज सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड. ओके, सीरियल में मेन कौन से आते हैं? दैट इज सीरियल्स. सो विच आर द एग्जांपल ऑफ सीरियल्स? सीरियल्स में ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. ओके, सीरियल्स में मोर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट.
सो व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, जवार बाजरा को माइलेट भी बोलते हैं। ओके, जवार बाजरा जो है इसको माइलेट भी बोलते हैं। व्हीट, राइस, कॉर्न, कॉर्न को मेज बोलते हैं। जवार, बाजरा दैट इज माइलेट्स, बार्ली, देन ओट्स, ओके, रागी, नाचनी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीरियल्स। ये सब क्या हो गए? सीरियल्स। देन पल्सेस, चना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटेसी, पिजन, पिजन पी, सोयाबीन, पी, दज आर द पल्सेस। एंड ऑयल सीड अभी मैंने आपको बताया, दैट इज ग्राउंडनट से हमें ऑयल मिलता है, सनफ्लावर से ऑयल मिलता है, सोयाबीन से ऑयल मिलता है, सीसम से ऑयल मिलता है, इवन कोकोनट से ऑयल मिलता है, आलमंड से ऑयल मिलता है। सो दज आर द ऑयल सीड्स, जिससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, सीड में कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर का भी क्या होता है? सीड होता है। ओके, कॉफी पाउडर का भी सीड होता है। देन अलोंग विथ दिस, ओके, अलोंग विथ दिस we obtain the spices from the different part of the plants. Okay, plants के जो different part है उससे हमें क्या मिलता है? That is spices मिलते हैं। It is also called condiments. It is also called मसाल्याचे पदार्थ। ओके, सो स्पाइसेस हमें प्लांट के रूट, देन फ्रूट, देन सीड, बार्क, ओके, दज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स जिससे हमें स्पाइसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूमिन इज द स्पाइसेस, मस्टर्ड, असाफोटिडा, टर्मेरिक, सिनेमन, क्लोव, जिंजर, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर। Okay, so those are the example of spices. Even kesher, those are the spices, and spices also we obtain from the plants. Spices भी हमें किससे मिलते हैं? That is plant से मिलते हैं। Okay, cardamom, उसको हम विलायची बोलते हैं। Okay, so those are the spices, and we obtain from the different part of the plant. Okay, understand? Then tea we obtain from the leaves. टी के क्या होते हैं? leaves होते हैं। Okay, so those are the food product which we obtain from the plants. Food product है, and हमें किससे मिलेंगे? plant से मिले। Food from the root, food from the stem, food from the flower, food from the leaves, food from the fruit, food from the seeds. Okay, so we obtain the food from the plants. Plants से हमें क्या मिलता है? That is food मिलता है। Now we also obtain the food from the animals. Okay, along with this, next one, हम जो फूड खाते हैं वो हमें कौन से सोर्सेस से मिलता है? फर्स्ट सोर्स दैट इज द प्लांट्स। प्लांट से हमें फूड मिलता है। यस, along with this, the food item which we eat is obtained from the animals. हम जो फूड खाते हैं वो हमें एनिमल से भी मिलता है। Okay, so second sources, so food and its sources. First main source, that is the plants. Okay, हमें जो फूड मिलता है किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। And then second most food source, that is the animals. हमें फूड मिलता है एनिमल से, and next one that is plants से। So first one plants we have discussed. Now next one that is animals. हमें फूड एनिमल से भी मिलता है। There are the two main sources. First source that is the plant source, and second source that is the animal source. So different type of animals gives us the different animal product. हमें different animal product मिलते हैं। For example, milk, meat, egg, honey. Yes, okay, like this different animal product हमें मिलते हैं। So first animal product that is the milk. Animal product है। Okay, first animal product that is the milk. So cow, goat, buffalo,
camel, sheep, reindeer. Okay, like this animal. Okay, yes, आता है. Okay, so cow, goat, buffalo, camel, sheep, reindeer, those are the animal which gives us the milk. And those animal which gives the milk, they are called milk animals. Okay, जो animal हमें milk देते हैं, उसको कौन से animal बोलते हैं? That is milk animal. Competitive एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. Okay, which of the following is milk animal? Those animal which gives the milk, they are called milk animal. And from the milk, there are the different milk product are made. For example, milk से पनीर बनता है, बटर बनता है, क्रीम बनता है, चीज बनता है, कर्ड बनता है, बटर मिल्क बनता है. So there are so many product, even मिठाई, बंगाली मिठाई. ओके, सो मिल्क से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं. यस, कर्ड बनता है, यस, घी बनता है, बटर बनता है, पनीर, चीज, क्रीम, सो मेनी मिल्क, बटर मिल्क, सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट, योगर्ट. यस, ये सब क्या है? यस, वेरी गुड. ये सब क्या हो गए? मिल्क प्रोडक्ट हो गए. एंड दिस मिल्क प्रोडक्ट, यस, दिस मिल्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट. ओके, उसको दो नेम है, या तो मिल्क प्रोडक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो डेयरी प्रोडक्ट बोल सकते हैं. नाउ ये जो मिल्क है, मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? दैट इज लैक्टोज. मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? दैट इज द लैक्टोज शुगर. दैट्स व्हाई मिल्क इज लिटिल बिट स्वीट. थोड़ा सा स्वीट लगता है मिल्क. ओके, बिकॉज उसमें शुगर प्रेजेंट होती है. एंड कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? दैट इज द लैक्टोज. एंड मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है, उसमें फैट भी प्रेजेंट है, समवट विटामिन मिनरल्स भी प्रेजेंट है. सो मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड. सो यू शुड कंपल्सरी ड्रिंक द मिल्क. ओके, मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड. उससे हमें सम अमाउंट शुगर भी तो उसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन का तो सोर्स है ही, फैट का तो सोर्स है ही, अलोंग विथ दिस विटामिन मिनरल्स भी आते हैं. सो इज इट ओके अबाउट द मिल्क? ओके, सो मिल्क के प्रोडक्ट कौन से है? पनीर है, चीज है, क्रीम है, बटर है, घी है, योगर्ट है. यस, ओके, बटर मिल्क है. So those are the milk product. Okay, then next one, that is the egg. Next animal product, कौन सा animal product आता है? That is the egg. Okay, next animal product में आता है egg. So honey, one minute, honey is also milk product है, fish भी milk product है, meat भी milk product है. Okay, so now we see about the second one, that is the egg. सबसे पहला एनिमल प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया, मिल्क. नाउ सेकेंड वन, दैट इज द egg. Okay, so geese, hen, duck are the some birds that gives the egg. Okay, yes, hen है, geese है, duck है. Okay, those are the bird which gives the egg, and those birds are called poultry bird. Okay, जो egg देते हैं, like duck है, geese है, turkey है, जो egg देते हैं, they are called poultry animals. Okay, so egg, again egg is the resource of protein. egg से हमें प्रोटीन मिलता है. so ओके, egg देने वाले एनिमल को कौन सा एनिमल बोलते हैं? पोल्ट्री. ओके, दोज एनिमल विच गिव्स द एग. ओके, जिसको रेयरिंग करते हैं फॉर द एग, दे आर कॉल्ड पोल्ट्री. नाउ नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट, दैट इज द मीट. ओके, ये फर्स्ट चैप्टर है ना 6th स्टैंडर्ड में. Okay, this is the first chapter of 6th standard. So next one, that is the meat. So meat mainly come from the hen, goat, sheep, duck, and a large population of the world
is depend on the meat as their staple food. ओके, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? तो मीट खाते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो मीट, अ लार्ज proportion of the world depend on the meat as a staple food. Okay, so meat, large proportion of the people's जो population जो है, जो कि मीट खाते हैं एज अ स्टैपल फूड। नेक्स्ट वन दैट इज एनिमल प्रोडक्ट में नेक्स्ट है दैट इज द फिश। Okay, first animal product milk, second one egg, third one meat, and then next one fish. So many kind of fish are eaten as a food by the large population of the world. अगेन वर्ल्ड में मीट के बाद सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? तो फिश खाते हैं। पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन, ओके, मेनली डिपेंड ऑन द फिश एंड सी फूड फॉर देयर फूड। जो पीपल कोस्टल एरिया में रहते हैं उनके फूड आइटम में, उनके डाइट में फिश प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, इज इट ओके अप टू दिस? एंड रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसिकल्चर। फिश को भी रेयर करते हैं, उसको सोल्ड आउट करते हैं। एंड रेयरिंग ऑफ फिश दैट इज कॉल्ड पिसिकल्चर। फिश आर रेयर इन द लेक, रिवर और इन द पॉन्ड। स्पेशल पॉन्ड बनाते हैं एंड उसमें फिश को रेयर करते हैं। सो फिश इज द कॉमन फूड इन कोस्टल स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल। ये जो स्टेट्स है इन लोगों के फूड आइटम में फिश कंपल्सरी प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट दैट इज हनी। Okay, next animal product that is the honey. So bees, honey bees collect the sweet juice. That sweet juice is called nectar. Okay, honey bees or bees collect the sweet juice, and that sweet juice is called nectar. Okay, so this sweet juice liquid is called honey, and honey is collected and stored throughout the year. ओके, हनी को हम स्टोर कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके, हनी जल्दी से स्पॉइल नहीं होता है। ओके, जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड, वैसे हनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता है। वी यूज हनी एज अ नेचुरल स्वीटनर। जिनको शुगर नहीं यूज करना है, दूध नहीं यूज करना है, ओके, वो एज अ स्वीटनर क्या यूज करते हैं? दैट इज द हनी इज अ नेचुरल स्वीटनर एंड हनी इज आल्सो यूज्ड इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें जो चूर्ण होते हैं, चूर्ण किसके साथ मिक्स करके लेते हैं? हनी के साथ। ओके, नाउ नेचुरली बीज हनी बनाते हैं, बट आर्टिफिशियली भी बीज को रेयर करते हैं टू ऑब्टेन द हनी, दैट इज कॉल्ड एपिकल्चर। ओके, so rearing of bee to obtain the honey and wax, that is called apiculture. honey bee को रेयर करते हैं to obtain the honey and that is called apiculture. So those are food item which we obtain from the animal. From the animal we obtain the meat, we obtain the egg, we obtain the meat, we obtain the fish, and we obtain the honey. Okay, so those are the animal product. Okay, so along with this mushroom we are also eating the mushroom. देखो आप मशरूम की वेजिटेबल खाते होंगे, मशरूम का सूप पीते होंगे, yes ना? So this mushroom, so mushroom are neither the plant or nor the animal. It is in the group that is called fungi. ओके, हम मशरूम खाते हैं। देखो बटन बटन मशरूम फेमस होते हैं। मशरूम की वेजिटेबल बनाते हैं, सूप बनाते हैं, कटलेट, आपकी मम्मी जो भी कुछ करती होंगी। ओके, सो मशरूम खाते हैं। तो मशरूम प्लांट्स में भी नहीं आता है, मशरूम एनिमल में भी नहीं आता है, तो मशरूम किसमें आता है? फंगी। ओके, सो मशरूम कंटेन द सेवरल विटामिन, मिनरल्स and mushroom is in the group and that group is called fungi. Okay, mushroom fungi में आता है। Again
We are using the salt in our day to डे लाइफ. ओके, तो salt भी प्लांट से भी नहीं मिलता है, एनिमल से भी नहीं मिलता है, हमें सी वाटर से मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्स. ओके, साल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स. फूड एटम है, बट प्लांट से मिलता है नहीं, एनिमल से मिलता है नहीं, हमें सी वाटर से मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्स है. इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स अप टू दिस? Plants like it. Okay. Now, next one. Okay. So we obtain the food from the plants and we obtain the food from the animals. Next one, food habitat of animal. Okay. Now, next one, on the basis of food habitat. Okay, on the basis of food habitat, animals are also classified. Okay, on the basis of food habitats. Okay, कौन से type का food खाते हैं? So on the basis of food habitats, animals are also classified. So first one, that is plants. Green plants prepare their own food. That's why they are called producers. ग्रीन प्लांट्स खुद का फूड खुद बनाते हैं, सो ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रोड्यूसर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट, एनिमल्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स. सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? दैट इज हर्बीवोर. इसको हर्बीवोरस भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट वन, दैट इज कार्निवोर. Okay, next one, that is carnivores. Then next one, that is omnivores. Okay, next one, omnivores. Then next one, that is scavengers. Okay, next one, that is scavengers. Then next one, that is decomposers. Decomposers, and again host and parasite. Okay, host and parasite. So the classification of animal on the basis of food habitat. सो ये सब क्या हो गया? एनिमल का क्लासिफिकेशन हो गया. कौन से बेसिस पे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट. ओके, कौन से टाइप का फूड खाते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट. सो फर्स्ट वन, that is herbivorous. Those animal which eat only plants. Okay, जो animals with plants खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? That is the herbivores or plant eater. Cow, goat, sheep, buffalo, then horse है, deer है, elephant है, zebra है, बहुत सारे examples आपको पता है. They are called herbivores. Okay, so those animal which eat only green plants. Okay, which eat only plants, सिर्फ plants खाते हैं, they are called herbivorous. So those animal have sharp cutting teeth in front. उसके सामने वाले teeth कैसे होते हैं? Sharp होते हैं. Okay, and big and wide grinding teeth at the back. उनके बैक के टीथ कैसे है? वाइड है. ओके, एंड फ्रंट के टीथ कैसे है? शार्प है. ओके, देन मेनी बर्ड्स सच एज पैरोट, pigeon eat only seed and nuts of the plants. So birds have the hard and pointed beak. उन बर्ड्स को टीथ होते हैं क्या? नो. फिर वो कैसे कट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड बिक. ओके, उनकी बिक कैसी होती है? शार्प होती है एंड पॉइंटेड होती है. देन बर्ड्स हैव हार्ड एंड पॉइंटेड बिक टू ईट द फूड. इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई है, हनी बी है, which suck the sweet juice of the flower. So they having a special mouth part for sucking the sweet juice. Okay, that special mouth part is called proboscis.
Okay, so insect have a special mouth part, and that mouth part is called proboscis. Okay, then caterpillar, grasshopper, beetle feed on the small leaves, and they are called tender leaves. And those animals which eat only grass, they are called ruminant. Grass eating animal are called ruminant. So is it okay about the herbivorous? Then next one, carnivorous, those animals which eat the other animal. Okay, those animal which eat the other animal or flesh of other animal. Animal that eat the flesh of other animal, they are called carnivores. Okay, so they are called carnivorous. So leopard है, lion है, tiger है, those are the some cheetah है, those are the some example of carnivores. Lion, tiger, leopard, cheetah, they have long sharp pointed teeth. उनके टीथ कैसे है? लॉन्ग है, शार्प है, पॉइंटेड है टू टीयर द फ्लेश. ओके, एंड नेक्स्ट वन फ्रॉग. फ्रॉग भी कार्निवोरस में है. तो फ्रॉग कैसे इंसेक्ट को कैप्चर करता है? हैविंग द लॉन्ग स्टिकी टंग. उसकी टंग, yes, long and sticky tongue. Okay, so these are about the carnivores. Then next one, omnivorous. Those animals which, don't talk, those animals which eat both plants and animals. जो दोनों खाते हैं, plants को भी खाते हैं, animals को भी खाते हैं, they are called omnivorous. Animal that eat both plants and other animals also, they are called omnivorous. Omni means all and over means to eat, all eater. Okay, omnivorous. For example, human being omnivorous है. Yes. Bear omnivorous है. Yes. Hedgehog omnivorous है. Yes. Rat, then dog, then crow, then cat, then pig, cockroach are the few example of omnivorous. Today you have to make your own list of herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavenger, decomposer, host and parasite. You have to make your own list by reading the books or with the help of Google. ओके, आप बुक्स रीड करके भी नोट डाउन कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ गूगल आल्सो. सो those are called omnivorous. Is it okay? So animal that eat both plant also and other flesh of other animal, and very good example is human being. Okay, human being is omnivorous. Now, next one is scavenger. Okay, those animals which eat the dead organism. Okay, those animals which eat the dead organism and clean the environment, they are called scavenger. Animal and bird. Scavenger में कौन होते हैं? Animal and birds. Okay, so animal and birds that feed mainly on remain of dead and decaying organism. जो भी कुछ dead and decay होता है, उनको जो खाते हैं, they are called scavengers. Organism that feed mainly on dead and decaying organism, they are called scavenger, and they help to keep the environment clean, and they help to return the nutrient to the environment, cleaning the environment and to return the nutrient to the environment. And then they protect us from the bad foul smell, and they protect us from the different diseases. Suppose any animal is dead, ओके, तो क्या होता है? फाउल स्मेल आता है, डिसीजेस स्प्रेड होते हैं यदि उसको स्कैवेंजर ने ईट नहीं किया तो. व्हेन स्कैवेंजर ईट दैट एनिमल, देन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड फाउल स्मेल आल्सो, from the protection of diseases also, and keep our environment clean. That's why scavenger is very important. Okay, so vulture है, crow है, foxes, hyena, jackals,
are the some example of scavenger. ये किसके, मैं रिपीट अगेन, वल्चर है, क्रो है, फॉक्स है, हाइना है, जैकेट है, दस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर. ये किसके एग्जाम्पल हो गए, स्कैवेंजर. Now next one, that is the decomposers, organism that feed on dead and decaying matter. Okay, organism that feed on dead and decaying plants and animal. Plants and animal matter जो खाते हैं, they are called decomposers. Those organisms which eat their plants and animals. Those organisms which eat dead plants and animals, they are called decomposers. Okay, organism which eat dead plants and animals, they are called decomposer, and decomposer also plays the important role in the environment. First one, keep the environment clean, and second one, recycling the nutrient to the environment. Okay, जो डेड एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं. ओके, सो रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट clean. Okay, so those are the function of decomposers. An example of decomposer is bacteria and fungi. Okay, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स आपको लर्न करना ही है, बैक्टीरिया एंड फंगी. दस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स. इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स अप टू दिस? Okay, now next one, that is host and parasite. So classification of animal on the basis of food habitat. कौन से एनिमल कौन सा फूड खाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन we have seen, that is herbivores, carnivores, then omnivores, then scavenger, then next one decomposers. Now next one, that is host and parasites. Okay, next one, that is host and parasite. Okay, next one, that is host and parasite. So host, these hosts do not make its own food. Host खुद का फूड खुद बनाता है क्या? No, host do not make their own food. Hosts do not make their own food. Host खुद का फूड खुद बनाता है क्या? No, hosts do not make their own food. So these hosts take the parasite. Parasite do not make own food. Parasite food बनाता है? No. So ये parasite कैसे खाएगा? Every organism need the food. मैंने आपको ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक सिखाए थे, वन शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाई थी, मिसेस ग्रेन सी डी. यस ना, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, मिसेस ग्रेन सी डी. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड द फूड. सो ये जो पैरासाइट है, डू नॉट मेक ओन फूड, सो इट टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट. क्या करता है? रेडीमेड फूड लेता है. किससे लेता है? दैट इज द होस्ट. होस्ट मेक देयर ओन फूड. होस्ट खुद का फूड खुद बनाता है, नहीं तो हेटेरोट्रॉपिक भी होता है. बट दिस पैरासाइट इज डिपेंड ऑन द होस्ट. प्लांट में देखा तो होस्ट फूड बनाता है. फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री. मैंगो ट्री होस्ट है, उसके ऊपर कस्क्यूटा ग्रो होता है. कस्क्यूटा क्या हो गया? Yes, cuscuta order क्या हो गया? Parasite. It take the food from the mango tree. Mango tree क्या हो गया? Host. So parasite do not make the food. It take the ready-made food from the host. So organism that live in or on the body of other organism for the food, that one is called parasite.
those organisms which lives on or inside the body of other organism for the food, that one is called parasite. And the organism they depend upon other for the food are called the host. ओके, होस्ट के ऊपर कौन रहता है? पैरासाइट्स रहता है. ओके, पैरासाइट टेक द फूड फ्रॉम द होस्ट. सो विच आर द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट? मॉस्किटो. यस, मॉस्किटो. मॉस्किटो पैरासाइट है, हमारा ब्लड सक करता है. मॉस्किटो का फूड क्या है? ब्लड. ओके, तो मॉस्किटो क्या हो गया? पैरासाइट. ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? होस्ट. ओके, नाउ स्मॉल बेबीज. स्मॉल बेबी के स्टमक में वार्म वार्म टेक वार्म, हुक वार्म, जनता म्हणतो ना आपण, इन्फेक्शन होते हैं. तो स्मॉल बेबी, यस, स्मॉल बेबी क्या हो गई? होस्ट. एंड उनके स्टमक में जो वार्म है, वार्म क्या हो गए? पैरासाइट. Okay, so mosquito, leeches, fleas, hookworm, tapeworm, roundworm are the examples of the parasites. Okay, ये सब क्या हो गए? पैरासाइट हो गए. कौन कौन से मैं रिपीट करती हूँ? मॉस्किटो है, लीच है, फ्लीज है, हुकवर्म है, राउंडवर्म है, टेपवर्म है. All are the parasite and it take the ready-made food from the host. किससे रेडीमेड फूड लेते हैं? होस्ट से लेते हैं. इज इट ओके अप टू दिस, माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फूड चेन. ओके, नेक्स्ट वन इज फूड चेन. So first of all, we have seen the food from the plants, food obtained from the plants. After that, we have seen that is food from the animals. Okay, then according to the food habitat, classification of animal: herbivore, carnivore, omnivore, scavenger, decomposer, host, and parasite. Now, next point, that is the food chain. Okay, next point comes that is the food chain. Okay, next point is food chain. From your 6 CBSE syllabus, आप 6 का कौन सा भी बुक देखो, food chain topic mostly होता ही है. So, a food chain shows that how living organism is depend on the other for the food, and this tells that who eat the whom. फूड चेन क्या बताती है? हु इट द हुम, कौन किसको खाता है. ओके, इट टेल अस हु इट हुम्स, एंड दिस शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन ईच अदर. सपोज वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर, डिपेंड ऑन द अदर. So this shows how organisms are depend on each other. So every food chain compulsory start with the producers. Every food chain से start होती है, that is the producers. And किसको हम producers बोलते हैं? That is the plants. किसको हम producer बोलते हैं? Plants. So plants make their own food. That's why plants are called producer, and it forms the first level of the food chain. Suppose in your exam there is a question which are based on the food chain. Every food chain compulsory start with producers. Producer means plant. आपको कोई भी plant दिखा, algae, algae is also green, make the food. algae दिखा तो algae से फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी. कोई भी प्लांट का एग्जांपल दिया है तो फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? प्लांट से. फूड चेन में सबसे पहले कौन होता है? प्रोड्यूसर्स. ओके, सो प्लांट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, एंड दे फॉर्म द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन. देन प्रोड्यूसर के बाद नेक्स्ट वन कौन आता है? दैट इज द कंज्यूमर्स. ओके, प्रोड्यूसर को कौन यूज करता है? कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स, कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर द फूड? दैट इज द प्रोड्यूसर्स.
ओके, कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स। नाउ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में थ्री टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, आपका पता है रिकॉर्डिंग करेंगे। First one, that is primary consumer, then next one secondary consumers, and then next one is tertiary consumers. Okay, so consumers में भी three type होते हैं. So first one, that is primary consumer, then secondary consumer, and then next one, that is tertiary consumers. So animals, सभी एनिमल्स, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर है तो एनिमल्स किसमें आते हैं? दैट इज द कंज्यूमर्स। ओके, सभी एनिमल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। एंड प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स। ओके, प्लांट्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स में एनिमल्स। सो एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का फिर से क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, अंडरस्टैंड? कंज्यूमर के फिर से कौन से थ्री फर्दर क्लासिफिकेशन? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, सो हर्बिवोरस, जो भी सभी हर्बिवोरस है, सच एज रैबिट, ग्रासहॉपर, ईट द प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो हर्बिवोरस होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, वो किसमें आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। नाउ दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं? दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय द टर्शरी कंज्यूमर्स। उसको कौन खाता है? टर्शरी कंज्यूमर। एंड ये सब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सभी डेड होने के बाद उनको कौन खाता है? स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स। ओके, सो सबसे पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स। ओके, सो प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं? कंज्यूमर्स। ओके, सो कंज्यूमर्स क्या है? एनिमल्स। कंज्यूमर्स में कितने टाइप है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ओके, सो हर्बिवोरस, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। Primary consumers are eaten by secondary consumer. Secondary consumers are eaten by tertiary consumer. And ये सभी डेड होने के बाद उनको कौन खाता है? Decompose, scavenger and decomposers. So this one is the food chain. Okay, and next one, when many food chain are combined together, okay, the network of interconnected food chain, that is called food web. Okay, food web, देखो होमी बाबा के एग्जाम में फूड वेब पे क्वेश्चन आता है। फूड चेन होती है, वो जो फूड चेन है उसमें कितने फूड वेब है, फूड वेब में कितने फूड चेन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लाइक दिस क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो हर भी और आइडेंटिफाई करो, प्राइमरी कंज्यूमर आइडेंटिफाई करो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्श, फूड चेन दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। Okay, so the network of interconnected food chain, when many food chain are interconnected, that is called food web. Okay, understand? Okay, when two three food chain are mixed, that is called food web. The network of interconnected food chain is called food web. Is it okay, my dear students? Yes. So here your chapter number 1 completed. I am sending you the answer of practice zone. Practice zone के मैं आपको answer share करने वाली हूँ. Okay, you have to note down in your notebook. So in this chapter we have learned that is food obtained from the two main sources, that is the plant source and animal source. From the different part of the plant like root, stem, leaves, flower, fruit, seed, then animal from the different product of the animal like milk,
meat, egg, fish, honey. Okay, these are the animal product. Then according to the food habitat, I have taught you the classification of animals. Then after that food chain. Then after that food web. So here your chapter number 1 from the 6 CBSE syllabus I have completed. Note down the question answering practice zone in your notebook. Share me PDF. Study properly. After 2 days, I will share you the test of this chapter. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के बेस मैंने एमसीक्यू टेस्ट बनाई है, होमी बाबा के लिए यूजफुल है, एनएसओ साइंस ओलंपियाड के लिए भी यूजफुल है। ओके, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए यूजफुल है। एमसीक्यू टेस्ट है, जस्ट लाइक द होमी बाबा एग्जाम। होमी बाबा एग्जाम में फाइनल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, वैसे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ओके, वैसा वो टेस्ट रहने वाला है। बट बिफोर दैट यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 2 days चैप्टर का अच्छे से स्टडी करो। आफ्टर दैट आई शेयर यू द टेस्ट। एमसीक्यू की टेस्ट है जो कि मैं शेयर करूंगी। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? ओके,